Welcome to everybody. Today I will discuss the method of charging depreciation. In the previous classes, we have already discussed the meaning, definition, needs, factors affecting calculating the volume of depreciation, side by side the causes of depreciation. And now we will discuss the methods. Methods of charging depreciation. Normally, as per your syllabus, there are three types of methods given in the syllabus. Number one is your straight line method, or it is otherwise known as original cost method. It is also called fixed installment method. Straight line method, original cost method, or fixed installment method. Same. Number two is your diminishing balance method, or reducing balance method, or written down value method. Say, first one is your straight line method, or original cost method, or fixed installment method. Second one is your diminishing balance method, or reducing balance method, or written down value method. Normally, it is commonly known as SLM method. Second one is your, it is WDV, or even this one you can say DDL. So most of the teacher normally, or in normal course, in the question you are asked to find or calculate depreciation under SLM method or WD method. It is rarely used. DBM method is rarely used. That is same, but the often as DBM is rarely used. Maximum, most of the question you will be asked in the question. Most of the question you will be asked as WD method or SLM method. WDV, written down value method. SLM method, straight line method. These are two methods. Third one is your annuity method. As per your syllabus, these three methods are prescribed in the syllabus: straight line method, WD method, annuity method. Different name is given under straight line as straight line method, original cost method, fixed installment method. Number two, diminishing balance method. Again you can say, or reducing balance method, or written down value method. Most of the question normally asked in the exam by using the method either SLM method or WD method. এই দুইটা মেথড মোস্টলি কোশ্চিন আসে ଆଉ କାଲକୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତ ଏଇ କାଲକୁଲେସନ୍ କଲାବେଳେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ମେଥଡ଼ କ'ଣ और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड
बा रिटन डाउन वैल्यू मेथड कौन अब बाबद बुझा एन्युटी मेथड आम जानी लॉगरिथम गोटे टेबुल अच्छी लॉगरिथम टेबुल लॉगरिथम आंटी लॉगरिथम जमती टेबुल गोटे अच्छी सेमती एन्युटी मेथड रे अंडर गोटे एन्युटी टेबुल अच्छी से हिसाब से तार अच्छी जो नंबर अलॉट करा जाय थाए तार वैल्यू एवं साइड बाय साइड तार टर्म मींस लाइफ स्पान आकु बेस करके गोटे नंबर मिलिबो से नंबर को बेस करके आम ए मेथड अप्लाई करके आम डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर परिबा बट मोस्टली आम कैलकुलेशन करबा मैक्सिमम क्वेश्चन ए आर ऊपर बेस करूची मींस क्वेश्चन मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 ए जो दुईटी मेथड अछि स्ट्रेट लाइन मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आम केमिति कैलकुलेशन करबा तार गोटे छोट कंपैरिजन टेबुल देखिए तार कैलकुलेशन देखिए तापर ए बाबद रे डिटेल्स इंफॉर्मेशन देखिए देखिबा कोन अछि let example cost price of an asset let example is your 100 rupees माने करो गोटे एसेट रो मूल्य 100 टंका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर annum आमे वर्ष को तार डेप्रिसिएशन चार्ज होची 10% तबे ए सेम क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस 100 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% आमे वर्तमान दीटा कंपैरिजन टेबल करी कैलकुलेशन कर देखिबा अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड रे कोन आसुची आ डब्ल्यूडी मेथड रे कोन आसुची अंडर SLM method WD method cost price for both it is 100 it is also cost price 100 तो आम एनुअली कौन करबा वर्ष को 10% तार वैल्यू डेप्रिसिएट करबा लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फर्स्ट ईयर 100 रुपीज रो 10% इट इज 10 सेम एठी मध्ये सेमते आसीबो फर्स्ट ईयर पई डेप्रिसिएशन आसीबो 10 ईयर एंडिंग रे वैल्यू आमे पाइले 90 एठी वैल्यू पाइले 90 सिमिलरली नेक्स्ट ईयर आमे माइनस करबा फॉर सेकंड ईयर से 10% it is 10 for second year it is 9 it is 81 it is 80 similarly third year it is also 10 less third year it is 8.10 balance is your 100 minus 10 90 90 minus 10 80 80 minus 10 70 it is 100 minus 10 90 90 minus 9 81 81 minus 8.10 it is 0 9 it is 2 7 after third year it is your BP it is BP book value तो कैलकुलेशन कौन आसला देखो स्ट्रेट लाइन मेथड WD मेथड अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड the amount of depreciation remains same throughout the economic life of the asset जीवन सारा तार रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ओरिजिनल कॉस्ट इज योर 100 ए ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर सब बेले 10% काउंट हे जिवो प्रथम वर्ष जो 10 रुपीस तार लाइफ स्पान और लास्ट ईयर मध्ये से 10 रुपीस कंटिन्यू करिबा दैट मींस ए 100 रुपीस के 10% हम कैलकुलेशन कले प्रति वर्ष 10 रुपीस रे माइनस हे तार वैल्यू डिक्रीज करि के जिवो बट अंडर WD मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड under reducing balance method or written down value method or you can say diminishing balance method the amount of depreciation gradually decreases that means the percentage of depreciation will be calculated
only on the BV, only on BV means book value উপরে এই book value উপরে কাউন্ট হই দিব। সেকেন্ড ইয়ার এন্ডরে এটি রইলা BV 81 rupees, ফার্স্ট ইয়ার অরিজিনাল কস্ট হলো 100 minus 10%, 100 और 10% হলো 90, নেক্সট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার को আমি পুনে এটি মাইনাস করলে 9 rupees, that means 10%, this 9 rupees is calculated from the BV, it is your 10%, 90 rupees ro 10%. Similarly 8.1 means 8 rupees 10 paise we calculated a value है, a value रो हमें 10% काउंट करे। इठी ये जो 10 rupees 10% एटा सब रहिबो तमरो कैलकुलेशन तमरो ओरिजिनल कॉस्ट करे थ्रू आउट द ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड अंडर व्हिच द अमाउंट ऑफ the percentage of depreciation is calculated only on the BV, sorry it is calculated on the cost price, whereas under WD method the percentage of depreciation is calculated on book value, that means the value as in the beginning वर्ष आरंभ दिन जति वैल्यू दिबो सेही वैल्यू पर काउंट हो। एठी हम यदि कंसीडर करिबा सर ए कॉस्ट प्राइस देखो अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द पीरियड, whereas under WD method the amount of depreciation gradually decreases 10 rupees, 9 rupees, 8.1, next year your 7 rupees 29 paise, that means 72 rupees 90 paise ऊपर तमर 10% काउंट हो। whereas आमे जदी SLA मेथड काउंट करबा एठी मध्ये आसी तमर 10% जोटा कि ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर कैलकुलेशन आसीबो। त एठी तमर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर रे जहा लास्ट ईयर मध्ये से WD मेथड रे प्रथम वर्ष जहा रहबो शेष वर्ष को लाइफ स्पान एंड रे केबे भी शेयर रहबो नाही। ए होची नॉर्मली डिफरेंस और भी नंबर ऑफ डिफरेंसेस अछि हमें देखिनबा कोन डिफरेंस अछि। आफ्टर एंड ऑफ द लाइफ स्पान ऑफ द ईयर द वैल्यू ऑफ द एसेट कम्स टू 0, दैट मींस द वैल्यू ऑफ द एसेट कम्स टू 0 और द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ स्पान ऑफ द एसेट। लेट एग्जांपल 100 rupees हमें 100 टंका हमरा कॉस्ट प्राइस वाला एसेट रे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, ताले एटा निश्चित भाबरे 10 वर्ष परे आ वैल्यू हमें प्रति वर्ष 10 rupees काउंट कले 10 वर्ष परे ता वैल्यू निश्चित भाबरे 0 होई जिवो किंबा 0 होई पारे। जति स्क्रैप थिबो ताले निश्चित भाबरे से स्क्रैप का तमरे एठी आसीबो। स्क्रैप कोन कहिबे उनके एटा कंपैरिजन करि कहूची। another one is your under WD method the amount the value of assets never be 0, केबे भी तार year span year ending रे माने तार लाइफ स्पान इकोनॉमिक लाइफ एंड रे तार लाइफ स्पान एंड रे यार वैल्यू केबे भी 0 हबो नाही, कोन स्थिति रे 0 हबो नाही। कारण एमती आमे बुक वैल्यू कैलकुलेशन करले ए वैल्यूटा केबे भी 0 हबो नाही, निश्चित भाବରେ किछि नेग्लिजिबल अमाउंट आमे पाइबा। ये रहला डिफरेंस। नॉर्मली ये जो कैलकुलेशन करिबा तमरो प्रथम वर्ष 10 rupees शेष वर्ष मध्ये 10 rupees, but it is a gap. Let example the asset having 100 rupees cost, 10 years lifespan, 10 वर्ष आरंभ रे हमें 10 टंका चार्ज करथिबा 10 वर्ष शेष मध्ये सेही 10 टंका हमें चार्ज करबा। देन वर्ष आरंभ तार लाइफ स्पान बिगिनिंग रे मध्ये 10 rupees, लाइफ स्पान एंड रे मध्ये 10 rupees। 10 वर्ष भितरे मनी रो जो होची वैल्यू होची धीरे धीरे समय अनुसार मनी रो वैल्यू जो ढंग रे हमर ट्रेंड रहूची तेनु प्रथम वर्ष आमे एटा इन्फ्लेटेड रेट रहबो, लास्ट ईयर केबे भी इन्फ्लेटेड रेट रहबो नै। दैट मींस एठी आमे 10 rupees चार्ज करबार अर्थ होची द निश्चित भाबरे एठी तोर प्रॉफिट कमी छिबो। एठी प्रॉफिट कमी बनी एठी मध्ये सेम शेयर मध्ये कैलकुलेशन आछो, कारण एठी आमे 10 rupees चार्ज करबा 10 years जो 10 year से वर्ष मध्ये आमे 10 rupees चार्ज करबा ता भितरे बहुत 10 वर्ष भितरे बहुत किछि ट्रेंड चेंज हे एठी 10 rupees whereas 10th year रे आमे 10 वर्ष चार्ज करबा निश्चित भाबरे 10 टका परिवर्तन निश्चित कम हे। तेनु एठी तमरो
आसेटा भैल्यू तुम जीरो हेनी और प्रॉफिट तुम जो रेट देखो से इनफ्लेटेड रेट देखो ये तुम इनफ्लेटेड रेट देखो ना ये जिनस एमती नंबर ऑफ डिफरेंसेस अच्छी बहुत गुड अच्छी मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर आस्क्ड टू write the difference between WD method and straight line method. Number of differences are there. Normally WD method is adopted by income tax authority, whereas straight line method is not adopted by income tax authority. That means under straight line method जब हमें कैलकुलेशन करते हैं इनकम टैक्स केबे भी कंसीडर करिवो नाही, whereas WD method को कंसीडर करिवो कारण WD method रे हमर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कमिले प्रॉफिट टा इनफ्लेटेड अधिक हम प्रॉफिट अधिक हम गवर्नमेंट को अधिक कर टैक्स दे पार। अनदर वन आउ गोटे आप गोटे आम कंसीडर कर कौन ना एट द टाइम बिगिनिंग ऑफ द ईयर जेहेतु ये आसेटा आरंभ प्रथम वर्ष इन ए गुड कंडीशन न्यू कंडीशन थाए और फंक्शनल कैपेसिटी बा एफिशिएंसी बहुत भलो थाए तो सेति लार्जर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज। As the year passes, the efficiency of the asset decreases. Functional capacity of the asset, that means the asset loses its functional capacity. That is why we charge comparatively less depreciation. It is advisable. So this is the difference. This is the normally difference. This is the normally analysis in between straight line method and WD method. Now see. Question is your cost price. What is cost price? Cost price particularly to calculate the cost price of the asset, different factors are to be taken into account. How to know? Now what will be the cost price of the asset? Particularly is your purchase price, transportation, installation charges or erection charges. Next one is your scrap value, or you can say it is salvage value. These are the items to be taken into account to consider the cost price of the asset. Purchase price, at what price or at the price that you have purchased from the supplier. केते टंकार हमें से कंपनी ठू किणी आनी जे सप्लायर हम केते टंकार छाड़ी सी एटा आसु तम पे परचेज प्राइस। सिमिलरली हमें से जोठी जिनसटा सप्लायर छाडुची से सप्लायर थारु हम बिजनेस करते आसे हमें हम किछि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दबा पई पड़े। इट शुड बी एडेड। Another one is your installation charges, erection charges or installation erection charges means से machine बा से asset को हमको production क्षम कंटिन्यू करिया पाई production क्षम करिया पाई बा ताको कंटिन्यू करिया पाई कार्यकारी करिया पाई हम किछि पैसा खर्च करिया पे पड़ता है जहां हम कहते इंस्टॉलेशन चार्जेस और जहां हम कहते स्थापना करिया पाई से बाबद रे किछि पैसा खर्च करिया पे पड़ता है। These expenses is also to be added. So these are the expenses इनका हम ऐड करिया पे पड़िवा। ऐड कला परे ए अमाउंट हमें जहां पाइले एठी ए अमाउंट प्लस ए अमाउंट all these are to be added. जदि हमें एगुडा प्लस न करिवा ताले एक्चुअल प्राइस पाई परिबेनी। ए एक्सपेंसेस गुडे को सब होचे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। इनडायरेक्टली कहले बा हम तको अब टिके क्लैरिफाई कर दोची एक्सपेंसेस अप टू द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन इज एडेड विथ द कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल प्राइस ऑफ द एसेट। जे पर्यंते गोटे एसेट कार्यक्षम न होइची से पर्यंते तमे जहा खर्च करिवो सब गुडे से रेस्पेक्टिव एसेट रे प्लस हो। वंस एसेट इज बीइंग यूज्ड और इज फिट फॉर production or fit for use
हे गला परे थरे यूज होला परे तापर तुम जहाँ खर्च करिवो सेटा को तुम एक्सपेंसेस रे प्लस करि परिबो सेटा तुम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जीवो व्हेयर ए गुडे सब आसुची तुमरो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस दैट मींस such type of expenses will not arise during the lifespan of the asset कारण एक थरे आम ट्रांसपोर्टेशन दबा इंस्टॉलेशन चार्जेस थरे हम कि खराब है आम यूज कर सारा किसी खराब है अलग किसी तार आवश्यकता पड़ेगा से खर्च गुड़ा तुम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रूप काउंट कर जोटा कि तुम कस्ट प्राइस सहित आड हो पार ना किंतु जदि आर किसी आम न्यू पार्ट आड कले से आड हो किंतु नॉर्मली रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बाबद में जहाँ खर्च हुए जोटा आर कस्ट प्राइस सहित प्लस हेबो नाही तो दीज आर दी एक्सपेंसेस हमको काउंट करिया पड़ो नेक्स्ट वन इज स्क्रैप वैल्यू अदरवाइज नोन एज साल्वेज वैल्यू इट इज एप्लीकेबल फॉर सम एसेट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल केसेस ऑल एसेट्स scrap value there are certain types of assets after the expiry of the economic life it is sold in the market and some amount is recovered whatever amount is recovered after the lifespan of the asset whatever recovered is known as scrap value or salvage value so most of the cases देखा जाए केतोडे केसेस मदर नाही depending upon the nature of the asset केतोडे salvage value मींस तमर scrap value अछि केतोडे scrap value नाही ताकू जज करके हम करे पड़िबो तने एग्जांपल हमें गोटे मेकानिकल आइटम बा गोटे मशीन आमे आनिचे ताकू आमे 10 इयर्स पई यूज करे 10 इयर्स पर देखिले इट इज नॉट इन ए फंक्शनेबल कंडीशन एटा को आ कार्यक्रम करि होबनी कि कार्यकारी हे परिबनी कि बा या कार्य करि परिबनी से केस रे आमे इसको डिस्पोज ऑफ करथा आफ्टर 10 इयर्स जेतला मार्केट रे हम देखो हटै देई थाउ जहा को हम कहथौ कबाड़ी वाला को देई थाउ एट स्क्रैप वैल्यू दैट मींस कि लुहा घंटा दर से बिक्री हो जाए तो व्हाटएवर अमाउंट रिकवर्ड दैट इज कंसीडर्ड एज स्क्रैप वैल्यू केतोडे केस थाए आ गुडे केतोडे एसेट रे तमरो रिटर्न वैल्यू जमा दिन थाए स्क्रैप वैल्यू कंप्लीटली जीरो हो जाए त जदी जीरो हो गेला त स्क्रैप वैल्यू हो नाही जदी स्क्रैप वैल्यू किसी रिटर्न मिले दैट विल बी कंसीडर्ड एज स्क्रैप वैल्यू शुड बी डिडक्टेड ए अमाउंट तमरो ए अमाउंट रो स्क्रैप वैल्यू एटा तुम माइनस करे कि कैलकुलेशन कला बेले ए स्क्रैप वैल्यू तमरो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कला बेले बा परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कला बेले एटा कमे काउंट करि थाउ तो नॉर्मली तमरो ओरिजिनल कॉस्ट आर ऊपर कंसीडर करा जाय देन परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करा जाय सेति बेले एटा काउंट कंसीडर करा जाय क्वेश्चन रो मॉडल ऊपर डिपेंड करछि हमें को रेट रे कैलकुलेशन करबा कारण केतोडे केस रे तमरो देई थाए परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन सिंपली परसेंट तुम आगे ऊपर कैलकुलेशन कर दबा तो जति परसेंट देई यू आर आस्क्ड टू फाइंड द परसेंट ऑफ डेप्रिसिएशन और द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन केते परिमाण रे हबो एनुअल डेप्रिसिएशन केते आसीबो तले से केस रे हमको एटा को कंसीडर करिया पे पड़िबो परचेज प्राइस परचेज प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस करिवो माइनस करिवो स्क्रैप वैल्यू व्हाटएवर अमाउंट दैट वी गेट विल बी डिवाइडेड बाय द लाइफ स्पान ऑफ द एसेट एग्जांपल 100 टका एसेट टा किनेली ये बाबद खर्च होला 20 रुपीस वैल्यू होला 120 टका लाइफ स्पान ऑफ द एसेट होला 10 इयर्स 10 वर्ष परे मते जेतले एसेट काम करूनी तापर हम मार्केट रे सेल करछे हमको रिटर्न मिलछि 20 रुपीस तो 120 रुपीस हमें 20 रुपीस माइनस कर देले और होला 100 रुपीस रो हमें लाइफ स्पान होला 10 इयर्स 100 बाय लाइफ स्पान 10 वर्ष पाइले हमें 10 टका से हिसाब रे हमें कंसीडर कर परबा एटा जे तमरो स्ट्रेट लाइन मेथड कैलकुलेशन रे अंडर डब्ल्यूडी मेथड मु जाटा बुझिली जेटा कि तमरो स्ट्रेट लाइन मेथड मींस एसएलएम मेथड अंडर डब्ल्यूडी मेथड फार्मूला अछि से फार्मूला पर हमको कैलकुलेशन करे पड़बो बुझे विषय बाबत रे तो हमको वर्तमान हमर बुझिबार अछि जे व्हाट इज कॉस्ट प्राइस परचेज प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस इंस्टॉलेशन और इरेक्शन चार्जेस एटा को नेले हमें एग्जैक्टली तार ए प्राइस ता को पाइछबा तापर तुम स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर करिवो यदि हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिबा स्ट्रेट लाइन मेथड डब्ल्यूडी मेथड
it is your amount, means depreciation amount, it is your time factor means year, एठी मध्ये आसलो तमरो depreciation जहा को हमें amount रे मेंशन करबा, एठी मध्ये तमरो आसीबो time means year. Time factor, amount of depreciation, beginning रू तुम देखे दिली एटा होची SLR मेथड, एटा होची WD method. Straight line method, the amount of depreciation remains throughout the period, throughout the lifespan of the asset. तेणु एठी तमरो depreciation line टा पूरा straight रहइबा, कारण प्रथम वर्ष एटा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर. लेट एग्जांपल, इट इज योर 10, 20, 30, 40, 50. 10 रुपीस हे पारे, 10,000 पे पारे, 10 लाख पे पारे. एटा अमाउंट रहबो, एटा टाइम रे आ पीरियड रहबो. तेणु प्रथम वर्ष डेप्रिसिएशन जेतिक रहइबो, तृतीय वर्ष डेप्रिसिएशन मध्ये सेतिक रहइबो, लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन मध्ये सेया रहइबो. यदि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिबा, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर एमती तुम कंटिन्यू करिवो अंडर स्ट्रेट, पूरा स्ट्रेट लाइन देखिबो. सेति तार ओके ना करा जाय छी स्ट्रेट लाइन मेथड. Under WD method, the amount of depreciation in the first year is higher than the amount of depreciation in the second year. That means the amount of depreciation gradually decreases. It is shown like this. First year, तमर volume of depreciation अधिक आसीबो. As the year passes, the volume of depreciation reduces year after year. ये रेंज डेप्रिसिएशन देखो सेम रहउची, किंतु ईयर अंडर WD मेथड द वैल्यू ऑफ depreciation gradually decreases. This is how we can represent the depreciation value in a graphical form. This is your straight line method, and this is under WD method. Under straight line method it is like this, under WD method it is like this. This is how you have to remember. Another one is your ए जिनिस को तुमको नजर रखिके मन रखिया पे पड़िबो, मन रखिया पे पड़िबो. तो इट पे हम एटा कोइ छे स्ट्रेट लाइन मेथड, इट पे एटा हम कोइ छे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. रिड्यूसिंग बैलेंस बुक वैल्यू पर कैलकुलेशन होती, रिड्यूसिंग जहां तमर बुक बीपी पाइबो, बीपी ऊपर कैलकुलेशन आसीबो. बीपी ऊपर कैलकुलेशन होले तमर वॉल्यूम ऑफ डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली डिक्रीज करिवो. वेयर एज एठी तमर वॉल्यूम ऑफ डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली केबे भी डिक्रीज करिवनी, रादर इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स सेम throughout the year. That is why the graph of under these two method is given like this. It is shown in the graphical representation is like this. एक ढंग तुमको देखेबो. This is all about your that is straight line method and WD method in which we can represent the represent the amount of depreciation in a graphical form. Okay, thank you.